Hello everyone, welcome to Coding for Dev. So in this video, we follow 10 plus machine coding interview question in React. So this is a one shot video. In this question, we can follow Accordion, calculator app, counter app, Debounce Search, image gallery viewer, image upload with preview, pagination table, code generator, star rating, theme feature, and Todo App. So you can watch this video at the end. So you can clear all the machine coding interview for beginners to medium level. Okay, so watch video till the end. की वीडियो में हम रिएक्ट का मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है और अधिकतर इंटरव्यू में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक टू डू ऐप, एक मिनिमल टू डू ऐप बनाने वाले, जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे को टू डू एप्लीकेशन बनानी है, उसमें हमारे को टास्क हम ऐड कर सकते हैं। उसमें एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सारे टास्क विजिबल होंगे। टास्क कंप्लीट होने के बाद जो लाइन आती है ना, फिर लाइन आनी चाहिए। टास्क को हम डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम यही टू डू ऐप बनाएंगे। तो अगर आप भी टेक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड पर। हम हमारा रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं npm create vite @latest। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टू डू ऐप। हम इसे रिएक्ट में बनाने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसकी डायरेक्टरी में चलते हैं, टू डू ऐप। देन हम सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं npm i करके। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ। npm run dev। तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम ये कोड को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम स्क्रेच से बनाएंगे। ये CSS भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, डिलीट। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक इसे हम टू डू ऐप बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम इनपुट देते हैं कि क्या इनपुट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम टू डू ऐप का नाम की हेडिंग देते हैं, टू डू ऐप। ओके, अब इसमें हम एक डिव बनाते हैं ताकि स्टाइलिंग अच्छे से हो पाए। फिर हम एक इनपुट देते हैं, इनपुट क्या है, टेक्स्ट इनपुट है। अभी इसके लिए हमारे को जैसे इनपुट लेंगे, तो इनपुट की जो वैल्यू रहेगी वो हम कहीं यूज करेंगे हमारे टू डूज में। तो सबसे पहले इसके लिए एक स्टेट बना लेते हैं टू डू की। तो सबसे पहले टास्क की एक स्टेट बना लेते हैं। तो यहाँ एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट टास्क सेट टास्क useState। अभी इनिशियली हम इसको खाली रखेंगे। ये हमारा एक स्टेट बन गया है। तो जैसे इनपुट है हमारा ये, तो इनपुट में हमारी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगा इनिशियली टास्क रहेगा हमारा वैल्यू। और जब भी जैसे हम उस पर करेंगे, हमारा जो वर्क होगा, उसके बाद जो वैल्यू चेंज होगी, ऑन चेंज होने पर जो वैल्यू है हमारी, वो हमारे टास्क में अपडेट होते रहे, इसलिए हम ऑन चेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ऑन चेंज फंक्शन लगाया और यहाँ हम एक इवेंट बनाएंगे। इस इवेंट में सेट टास्क और इवेंट को टारगेट करके उसकी वैल्यू को हम शो करेंगे। तो हमने एक इवेंट बना लिया। यहाँ प्लेस होल्डर क्या देंगे, जैसे यहाँ पे प्ले होल्डर की एक आता है, तो इसमें हमें
क्या शो होगा, तो हमारी जो प्ले फोल्डर है उसमें हम शो करेंगे 8 टास्क। ओके, तो ये अभी हमारा इनपुट बन गया है। अब जैसे इनपुट होगा तो इसके बाद एक बटन होगा उसमें, जो उसके फाइल में जिसमें हम इनपुट बटन देंगे, तो उसके लिए हम एक बटन बनाते हैं, ये बटन। अब इस बटन में क्या रहेगा, ऐड रहेगा। जैसे इस पर क्लिक करने पर हमारा टू डू ऐड होगा, तो इस बटन पे भी हम एक फंक्शन लगाएंगे। तो अभी हम एक फंक्शन ऑन क्लिक एक ऐड टू डू नाम का फंक्शन बनाएंगे। अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन अभी अपन बनाएंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ऐड टू डू। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको फंक्शन को बना ही लेते हैं। लेकिन जैसे हमारा टू डू रहेगा उसमें हम हमें केवल टू डू स्टोर नहीं करना, हमें टू डू के साथ उसकी एक आईडी भी बनानी है, क्योंकि हम डिलीट करेंगे तो उसकी आईडी पे डिलीट करेंगे। हमें उसके साथ उसको उसको साथ में मार्क भी कराना है। तो उसके लिए हमारे को केवल सिंगल टू डू को स्टोर नहीं करना, टू डू बहुत सारे टू डू स्टोर कराने हैं। इसके लिए हम एक और स्टेट बनाएंगे, उस स्टेट का नाम रहेगा टू डू। जैसे ये है केवल हमारे टू डू को स्टोर करने के लिए, लेकिन हम एक और बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा अरे रहेगा, जितने भी टू डू रहेंगे सारे स्टोर रहेंगे। तो उस स्टेट का नाम देंगे टू डू। अब इस टू डू पे फेट टू डू, और इसमें हमारा इनिशियली क्या रहेगा, एक अरे रहेगा, अरे। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं हमारे एड टू डू के लिए। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट एड टू डू। ये हमारा फंक्शन बन गया। अभी फंक्शन में इसमें क्या हमारे को जो भी टास्क आएगा, तो टास्क क्या कोई स्पेस देता है, तो स्पेस को गायब करने के लिए पहले हम उस टास्क को ट्रिम करेंगे, उसके बाद हम हमारे टू डू सेट करेंगे। तो पहले ट्रिम कर लेते हैं उसको। तो इफ अगर एक कोई टास्क आया, तो इफ टास्क डॉट ट्रिम करेंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम टू डू को सेट करेंगे, किसमें, सेट टू डू में। अब इसमें हम सबसे पहले जो अपने पहले से टू डू रहेंगे उनको स्प्रेड करेंगे, जो पहले से इसमें टू डू पड़े रहेंगे ना, उनको हम स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हमारा ये बड़ा टू डू ऐड करेंगे। इसके लिए हम एक स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा सबसे पहले आईडी रहेगी। आईडी मतलब हर टू डू की एक यूनिक आईडी रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम आईडी बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, उसमें डेट दे देंगे, मतलब जो जिस समय जो क्रिएट होगा उसकी डेट को हम उसकी आईडी दे देंगे। उसके बाद टेक्स्ट में क्या रहेगा, हमारा टास्क, जो टास्क हमने टू डू में दिया। उसके बाद उसमें हम एक कंडीशन, जैसे डन हुआ है कि ना हुआ, तो उसके लिए हम एक ट्रू और फॉल्स बाइनरी देंगे। तो अभी हमारा जो इनिशियली हमारा टास्क रहेगा वो फॉल्स रहेगा। तो ये हमारा ए टू डू का। और जैसे ही मान लो हमने टू डू पर क्लिक करा, तो उसके बाद जो हमारे इनपुट में जो टू डू लिखा रहेगा वो पूरा मतलब उसकी जरूरत नहीं ना, वो टू डू ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हम उसको एम्प्टी कर देंगे, जो सेट टास्क है उसको हमने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो ये हमारा ए टू डू का कोड लिखा गया है। अब लेकिन जैसे हमने कोड लिख दिया है, तो अभी ये कोड शो भी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या इनपुट का कोड लिख दिया है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में हम टू डू शो करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने ये ड्यू बनाया था, इफ ड्यू में क्या था, इनपुट था और उसको ऐड करने का था। एक और ड्यू बनाएंगे, और इफ ड्यू में क्या रहेगा, एक अनऑर्डर लिस्ट रहेगी। उस लिस्ट में हमारे टू डू को हम मैप कर देंगे। तो टू डू डॉट मैप टू डू। एक लिस्ट बना दी है हमने। अब लिस्ट की हम एक की देंगे, क्योंकि वरना एक कंफ्यूज हो जाता है। हम इसकी की क्या देंगे, टू डू डॉट आई डी, जो उसकी आईडी है वही हम उसकी की दे देंगे। अब इस पे हम स्पेन
इसमें हम बताएंगे टॉगल बटन। हमारा जो स्पेन रहेगा, जो टू डू रहेगा, उसमें हम क्या टॉगल बटन भी वहीं पे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे उसके क्लिक होने पे टॉगल बटन क्या करेगा, उसके क्लिक होने पे उस पर लाइन ला देगा, तो उस वो हम स्टाइलिंग में देंगे। जो हमारा स्पेन है उस पर हम टॉगल बटन का एक वो बनाएंगे फंक्शन। तो अभी मैं फंक्शन बना देता हूँ। ये हमने टॉगल टू डू, ये हमने फंक्शन बना दिया। इसमें हम आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि कौन सा वाला टॉगल हुआ है, तो आईडी हम देंगे। उसकी जो डेट थी ना वही हमारी आईडी है, और वही हमने टू डू डॉट आईडी कर दिया है। वो कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई कोड में? हाँ, हमने थोड़ा ऑन क्लिक ऑन क्लिक एक फंक्शन है ये, तो टॉगल टू डू टू डू डॉट आईडी। तो हमारा इस पे स्पेन फंक्शन लिखा गया है। इस स्पेन में क्या रहेगा, हमारा टेक्स्ट रहेगा। कौन सा? टू डू का, टू डू डॉट टेक्स्ट। ओके। अब जो हमारा स्पेन है उसमें हम एक कंडीशन देंगे कि अगर टू डू हमारा डन हुआ तो उस पर एक लाइन ड्रॉ हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेन में एक स्टाइलिंग दे देंगे। जैसे इस पे स्टाइल, स्टाइल क्या देंगे, टेक डेकोरेशन, डेकोरेशन। अगर टू डू डॉट डन रहेगा तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, तो उस पर लाइन थ्रो कर दो, नहीं है तो नन कर देंगे, नन। और हम सिंपल भी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि हमारे उस पर कर्सर रहना चाहिए। अभी ये नन। हम्म और कर्सर हमारा पे क्या रहना चाहिए, पॉइंटर रहना चाहिए। तो ये हमारी इसकी स्टाइलिंग भी हो गई हमने। अब हमारे दो फंक्शन हो गए, एड टू डू होगा, टॉगल टू डू होगा। एक और हम बनाते हैं डिलीट टू डू। तो इस पेन के नीचे बना लेंगे अपन बटन, उसी टू डू पे हम उसका डिलीट का बटन बना लेते हैं। तो उस पे हम देखते हैं डिलीट, और इस पे हम इसका फंक्शन लिखते हैं। इसका फंक्शन हम छोटा सा ही फंक्शन है, यही लिख देते हैं कि ऑन क्लिक डिलीट टू डू, डिलीट करना उसकी आईडी से। ओके। तो अभी हमारे को इसके फंक्शन, हमने टॉगल वाला और डिलीट वाला फंक्शन नहीं लिखे, कि एक बार दोनों फंक्शन लिख देते हैं हम। तो हमारा टॉगल वाला फंक्शन क्या था, कॉन्स्ट टॉगल टू डू। इसमें हमें आईडी देनी पड़ेगी, और इसमें हमने क्या करा, सेट टू डू। इसमें हम टू डू मैप करा देंगे पहले। और इसमें भी हम टू डू की आईडी दे देंगे, टू डू आईडी। अगर आईडी के इक्वल है तो डन कर देगा। नोट टू डू, अगर वो आईडी पे मैच कर रहा होगा तभी हमारा टू डू डन होगा, वरना टू डू डन नहीं होगा। ये था हमारा फिट टॉगल वाला कोड। हम डिलीट वाला कोड और लिख देते हैं हम।
इसकी आईडी दे दी हमने, और इसमें भी सेट टू डू। इसमें हम क्या फिल्टर लगा देंगे, हमारा सिंपल डॉट फिल्टर, और फिल्टर में हम टू डू रखेंगे, और टू डू की आईडी अगर इक्वल है उसके आईडी के, तो ही हमारा कोड रन करेगा। टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आई डी। तो ये हमारा डिलीट का कोड रख दिया हमने, सब बाकी सारे कोड हमारे लिखाना है। तो एक बार देखते हैं हमारा कोड रन कर रहा है। यहाँ टू डू है, हमने हाई करा, ये हमारा टू डू एड हो गया। इस पर क्लिक करने पर हाइफन आ रहा, डिलीट करने पे टू डू डिलीट भी हो रहा। तो देखो ये हमारी टू डू प्रॉपरली काम कर रही है। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने टू डू एड करा, जैसे हमें कुछ डी से पढ़ना है, तो हमने टास्क ऐड कर लिया, पढ़ लिया हमने, तो उस पर क्रॉस हो गया, और उसको डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। तो यही था हमारा, जो कि अभी तक अधिकतर मशीन कोडिंग इंटरव्यू में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टू डू ऐप तो बहुत मतलब 90% मशीन कोडिंग में टू डू ऐप तो पूछते हैं। इसमें ओल्ड फीचर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम ओल्ड टू डू फिल्टर कर सकते हैं। मतलब बनाने में टू डू ऐप का एक पूरा फुल स्टैक टू डू ऐप बना दें। लेकिन सिंपल जो मशीन कोडिंग इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो इस तरह की बेसिक कुछ सिंपल एप्स पूछी जाती है। रिएक्ट का मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि जनरली टेक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज हम एक रिएक्ट का एक काउंटर ऐप बनाएंगे, जिसमें हम क्लिक करने पर काउंटर इंक्रीज होगा, काउंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिसेट होगा। इसमें हम रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जैसे कि स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग यूजस्टेट हुक, और इसमें हम इवेंट हैंडलिंग और कंडीशनल हैंडलिंग का भी यूज करेंगे। तो अगर आप टेक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग वाइट। तो सबसे पहले हमें उसकी कमांड लिखनी है। इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे काउंटर ऐप। इसको हम रिएक्ट में बनाने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे हम इसमें। देन हमें वो फोल्डर पे आ जाना है, देन काउंटर ऐप, देन हमें हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेनी है। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद हम इसमें एक बार इसको रन करके देख लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ। देखो ये इफेक्ट प्रोजेक्ट हमारा सेटअप कम्प्लीटली हो गया है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर ऐप बनाने वाले हैं। तो जैसे इस पूरा इसको पूरे को हम क्लियर कर देंगे। लाइक केवल ऐप दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक या तो अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, या तो हम ये सिंपल प्रोजेक्ट है तो इसी में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम, जैसे हमारा डिव है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक नाम क्या है, काउंटर ऐप। ओके, अब इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, काउंट को शो करने वाले हैं। तो अभी जैसे काउंट के लिए हमें एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी वो अपडेट होगी तो वो एक स्टेट होगा, ना कि वेरिएबल होगा। तो हम एक स्टेट बना देते हैं, कॉन्स्ट काउंट से काउंट। अब ये स्टेट हम यू स्टेट की मदद से बनाते हैं, और इनिशियली इसकी वैल्यू रहेगी 0। ओके, नाउ हम इसको डायनामिक बनाएंगे। तो हमने एक काउंट लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद एक डिव रहेगा, इस डिव के अंदर हम दो बटन बनाएंगे। पहला रहेगा इंक्रीमेंट बटन, जिसमें +1 होगा। दूसरा होगा डिक्रीमेंट बटन, जिसमें -1 होगा। ओके, अभी हमारा सिंपल बन चुका है। अभी इसको हम सेंटर कर देते हैं, अलाइन।
ओके, तो ये सेंटर हो गया है। अभी इन दोनों के बीच में हम, ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। ओके, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा। तो अभी हमको एक सबके इसके लिए इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे इसको प्लस करने पर, हैंडल करने के पर ये काउंट इंक्रीज होगा। जैसे हम +1 करेंगे काउंट हमारा इंक्रीज होगा, और जैसे -1 करेंगे हमारा काउंट डिक्रीज होगा। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इवेंट्स बनाएंगे। अब इवेंट्स के नाम करेंगे, पहला इवेंट रहेगा हमारा कॉस्ट हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, ये हमारा इंक्रीमेंट इवेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, जैसे ही ये क्लिक होगा तो हमारा सेट काउंट वो क्या होगा, काउंट +1। तब हमारा जैसे ही इवेंट क्लिक होगा हमारा सेट काउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे इसको हम बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, जैसे अभी क्या होगा, हमने इवेंट क्या लगाया है, जैसे हमारा बटन है +1 वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट इवेंट ऑन होगा। उसमें क्या लिखा है हमने कि जो फेट काउंट है, जो काउंट है हमारा, वो काउंट से इंक्रीज हो जाए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये वर्क नहीं कर रहा। फेट काउंट हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, फेट काउंट, ये वर्क कर रहा है, काउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी हमने नेगेटिव वाले का नहीं करा है, तो अभी इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक और हैंडल इवेंट बनाएंगे, वो है हैंडल डिक्रीमेंट। इसमें क्लिक करने पर हमारा फेट काउंट क्या होगा, -1 होगा। ओके, लेकिन अभी हम इसको ऑन क्लिक इवेंट पे क्लिक कराने पे रन कराएंगे। तो हम ऑन क्लिक हैंडल डिक्रीमेंट। ओके, तो अभी जैसे हम इंक्रीज करने पे हमारा काउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करने पे हमारा काउंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, काउंटर एप में, कि ये नेगेटिव जा रहा है हमारा, मतलब नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे मान लो ये 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो हम नेगेटिव करें तो वो 0 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे काउंट है, इस काउंट पे हम क्लिक करेंगे। इस काउंट में क्या, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 हुआ हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, काउंट -1। अगर नहीं होगा तो वो 0 ही रहेगा। मतलब अगर 0 से नीचे रहेगा तो हमारा वो डिक्रीज नहीं होगा, केवल 0 ही रहेगा। तो इसे हमने हैंडल कर लिया है इवेंट को। अभी इसको रिसेट करते हैं। अब देखो, हम इसको कर रहे हैं, काउंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये डिक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगा दी है। ये इंक्रीज हो रहा है, काउंट डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह हमारे को काउंटर एप्लीकेशन बन चुका है। मतलब ये बेसिक कोड, इसका बेसिक फीचर। इसमें हमने एक बार हम रिवाइज कर लेते क्या क्या करा। हमने सबसे पहले एक स्टेट बनाया। स्टेट में हमने उसकी वैल्यू स्टोर करके, इनिशियली हमने 0 वैल्यू स्टोर करके रखी। उसके बाद हमने उसको शो करने के लिए एक काउंट, डायनेमिक काउंट वैल्यू बनाई। अब जब भी अपडेट होगा ये काउंट हमेशा अपडेट होगा। इसके बाद हमने 2 बटन बनाए, एक बनाया हमने इंक्रीमेंट बटन, एक बनाया डिक्रीमेंट। इस दोनों के लिए हमने 2 हैंडल फंक्शन बनाए। पहला है हैंडल इंक्रीमेंट, दूसरा है हैंडल डिक्रीमेंट। पहले वाले में हमने क्या करा, फेट काउंट है, काउंट इंक्रीज होगा तो काउंट +1 होगा। और दूसरे वाले में हमने कंडीशन रखी कि अगर 0 से कम होगा तो हमारा काउंट 0 ही रहेगा, वो और डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन, मतलब कोड पूरा वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम जैसे डबल क्लिक करते हैं किसी वैल्यू को, तो ये काउंट क्या एक साथ 2 वैल्यू नहीं दे सकता। जैसे मान लो अगर इसको इंटरवल्स में चलाया तो हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे वैल्यू, तो ये
कभी कभी मतलब वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली, मतलब दो वैल्यू को एक साथ नहीं दे सकता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्रीवियस का यूज करते हैं। जैसे अभी क्या हम काउंट की वैल्यू का यूज कर रहे हैं कि काउंट से प्लस करना, काउंट से नेगेटिव करना, लेकिन इसका अगर अच्छा जो कोड अगर हम लिखे तो इसमें हम प्रीवियस का यूज करते हैं। लाइक हमने भी काउंट लिख रखा है, यहाँ पे हम प्रीवियस का यूज करेंगे। तब ये कोड नॉर्मली ये कोड अच्छा कोड है, लेकिन इसको ओवर ऑप्टिमाइज वर्जन इसका, इसमें हम प्रीवियस का यूज करेंगे। तो प्रीवियस का यूज कैसे करना है, इसे मान लो यह प्रीवियस है, प्रीवियस प्लस 1, प्रीवियस ग्रेटर देन 0। लाइक अभी भी हमारा कोड सेम उसी तरह वर्क करेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा होगा कभी मतलब अब हम क्लिक करेंगे तो हमारे हमेशा कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जैसे फेड टाइम इफेक्ट में भी चलाया हमने, इंटरवल में भी चलाया, तो कोड हमारा प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो ये हमारा काउंटर ऐप बन चुका है, पूरी तरह वर्क कर रहा है। डिबाउंस सर्च बॉक्स, दिस इज अ क्लासिकल machine coding interview question in for React. For now, the problem statement of this question, like you are required to build a simple React component called search box that allow user to search through a list and a username. Like the functional requirement, render an input box with a placeholder like search users. If the user type filter the list of usernames that include the type query case sensitive. This is like a case sensitive. So like any word that are in capital letter also are searched. Display matching result in a drop down list below the input. Clicking on a result should populate the input with the selected user and hide the result. Implement debounce for the filtering logic only run 300 meter, only run 300 millisecond after the user stop typing. So in this we use an array of string representing the usernames, like any name like Elias, Bob, Charles, David. So like you show in example like typing AL show Elias name, and typing A should show Elias, Charlie and David name. So now we go to VS Code to build this debound search box. This is a very classical question for React interviews. So watch full video till the end. So first we can create our React project using Vite. So we write the command npm create Vite @latest. Then under the folder, now we select our framework is React and the language is JavaScript. Okay, now our package is created. Now install all packages using npm install. Now our boilerplate code is generated and the node module for installing. Now first we can remove the, like first we can run the code, then we can remove the unnecessary code that are given. So this our project setup is completely working. Now the remove the unnecessary styling or remove the app.jfx boilerplate also. Now use the rfc function. Then our project name is Debounce Search. Okay. And now we create it. Now we create a component. Okay. So create components, and the name of the components is searchbox.jfx. Then we use the rfc function, then the code,
Now import this on the app.js. Now the name is search box, then import it, like finally import it. We can check it's working or not, like this is properly working. So now what should we do? Now we create a data JSON file where all the names are stored. So we create a folder named data. In data list there is a file data.js. In the file we can create component name users. We can write names like Alex, Charlie, David, and Tom. Now export this users. Okay, we export it. Now import in app.js file. Okay, so we can import data, import users from data and data.js. Okay, now the data we can give transfer in the search box. So we can create a function name user and give it users. Okay, now we can open this. We can using props we can import the users in our search box. Okay, now import the users. Now we can create the input. In input text the placeholder is search box. Okay, search here. Then the value are stored in query. We can create a state using useState hook. So we create const so we can create the state in the search box. Okay, so const query and set query. Now we import the useState hook, and in initial value we can empty the query. Okay, now we can on click function, then we write a function handle change. So we create the handle change function, const handle change. In handle change we take e and fed the query e dot target dot value. Okay, now our handle change function. Now we can create a one more state name filtered to store the old filter content. Like we can search the data automatically filtered. So we create a state name filter. Now fed filtered and the state name useState. Okay,
Now this is a array. Okay. Set filter. Okay. Now import it. Now we write a condition for data. Okay. The condition is filtered dot length is less than 0 and end. Filter dot map user, and the user, like this is under the unordered list. Okay. So we rewrite this like this is the unordered list. We create unordered list. Okay. Now we use filtered dot map and we pass the user and user. Okay. The users are filtered and they are showing. Okay. Now set filter is working. Now we add the debouncing functionality on this code. Now we use the useEffect hook for debouncing. We use the useEffect hook if we create one more state, const debouncing query, and query set debouncing query. Okay. And the useState, the initial value of the query, and then run it. Now use the useEffect hook. So if debouncing query const result equal to users dot filter users like the value of the target fed query value. The resulted value is the query. So user dot we apply the two lowercase function, then includes on this, then we debouncing query dot two lowercase. To lowercase
then the function, then this is the result. Okay, now we can set filtered is equal to result else set filtered have array. Okay, so this is the debouncing logic, and we can import the useEffect hook also. Okay, now we use one more useEffect hook for the timing, like we can show the result after 300 millisecond, so we use another useEffect hook. So we create a handler, host handler, so in handler we set the timeout of the, like we set the time out. Now we set the debouncing query to the query. Okay, now the timing is 300 millisecond. Now this return clear timeout, like after the 300 millisecond they can return the timeout and pass the handler, and we add the values query. Okay, so now our code is like the completing stage. Like we can recap what we do on our code. First we create a file, and we can create a component named search box. We create a data file, we import data and pass the data using prop drilling to the search box. And the search box we first create three states, first for query, second for the results, and third for the debouncing query. So we take the input, and when on the input click we set the query, and the query go to the debouncing query, and when the result the data are filtered and show to the user. Okay, now we can run this. So I think there is some issue in our code, so we check what's the error. The function name is on change, and the filter length greater than 0. Okay, dot map, the useEffect hook is correct. Pass the key. Now check the code. Okay, our code is working. Our code is working now. Like you can also do the styling also. Go app.jx, and
style if display effects line item enter left direction column. Okay, so this is the styling. So there will show an alignment. So now we can search the name. So now our code is properly working. Build a machine coding interview question. Name a calculator using React. For we the problem statement is the create a simple calculator using React that perform basic the arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, and percentage. Your calculator should have a clean and responsive UI. The style button and input display. Requirement: the user React functional components and useState for managing state. Include button for digits 0 to 9 operations. And clear and equal operator. Click a button should update the input and evaluate the expression. The input should be displayed in a style text box and read only. Okay. For now, we can create this machine coding interview. They are asked in for front-end developer roles. So let's go to VS Code. So now first we can create the React project using the npm command. So first we can create using the vid bundler. Create npm create vid at the rate latest, and under this calculator app folder. Okay. Now we create using React framework and the language is JavaScript. Okay. Now we install all the packages. Now we check the code is working or not, the setup is completely done or not. So yeah, our code is working properly. So we can remove the unnecessary codes. We create the unnecessary styling also. Now we create, I will give a heading name calculator. Now create a component name. The name of the component is calculator.jsx. Now RFC. Now we see what are the visible. Okay. Now we do some basic styling. Use the inline styling. We can display flex and the flex direction is colon and align item hit center. Okay. Now we import the calculator component on this.
We import it. Now we create the kilometer. Okay, so first we give the input. There is one input box. Input type text, and we create a state name input and set input. We use for the statement engine, we use useState hook. Now the input value is equal to input. Okay, now we have input. Now what we do, we create buttons. So we can create the buttons. Cost buttons. So you already saved the buttons, so I paste it. So this is all button we used in. So now map the buttons. So buttons dot map button, and we pass the index also. Now we create a button. Write the buttons here, and we give this button to a key for their render name index. Okay, I will show it on the screen. Like we all buttons are visible. Now what we do is do some basic styling on this also. We use inline faces also on this also. We use display grid. Print. So now we see it. So we create a function, handle click on click function, like that do handle click, and we give pass the button on the function. So now we can create the function const handle click. Now we apply if condition, and we take the value as a prop. So now if the value is equal to C, so the set input is empty, else if the value equal to the equal operator, then set input equal to evaluate the input, else
the set input is equal to input plus value. Okay, now this is the mini function. So we check the function is working or not. So like we can 7 plus 1. So now this is properly working. Now we check the what is the problem on the styling. So we correct the styling. Like with the styling, are we doing it on the buttons that are on their div? Okay, so we correct it. So now we check our like it's properly working. Now we can clear. Also we can add elements, subtract also, and we can multiply also and divide also. So this is our mini calculator that are mainly asked in machine coding interview for a quick test. So there are the main logic are the evaluation logic. So you directly evaluate using evaluate function. Machine coding interview question, like you can create a simple image gallery viewer. So like the problem is build a simple image gallery in React where clicking an image open a model to view the image. So the requirement like the image are on the top of the image, or the when the user click in the bottom they show the image, and you can right click change the image, and left you can slide the image also. After the model close, the button cross button close, the image hide. So we give a sample images data. We use React for this. For now we create this, follow this problem. So first we go to VS Code. So first we can install our React packages, set up our React project. npm create vite latest in under this folder. Now we select the library React and the language of JavaScript. Now install the packages, npm install. Now run this. Now run this code. Okay. So let's see our project setup is completely done. So now we remove the unnecessary code, unnecessary styling. And now first we create a React function even rf3. Okay. So now first we create a file where all the images are loaded. So we create a data file. We create a image.js. Then we paste a dummy data. Like I already copied them. So this is the dummy data where the image of ID, hierarchy in the image. Okay. So now we create a component for the gallery. So we create components name gallery.jfx. Okay. So we write this rfc also. So we created rfc function this gallery, or we now we can give a name like the image gallery viewer. Okay. Now we import the gallery from this. Okay. Now let's see
Okay, now we first do some basic styling. For use the inline styling, display flex, align item, center. Okay, and the flex direction is column. Okay, so now we update the gallery component. So first we can create a div for first load all the images for import from the images from data and under data image file. Now I map all the images map image and I. Okay, now we change image tag. Okay, so now give the FRC image dot FRC. Okay, for check like the all the images are showing. Now give ID also, key ID for image dot ID. Okay, so now image are now on click we set a state. Function name. So first we can create the state using useState. So give the name is index, right set index. So useState null, the initial value null. So now write set index to equal to I. Okay, now we map all the element after clicking on the, so we create model. So we write a condition like if the index not equal to null, and then I create a div. Okay, so now in div we first create a image tag for showing image. So now in this the FRC, so we write images select index dot FRC. Okay,
Now we check it. After finding the image is showing or not. Wait index. So we give a name like select index. Okay. Select index. Okay. So now on the selected, if the not viewable to null, we can print the image. Okay. We let's check the code. The image gallery is showing. We create the useState before the function. We create under this gallery function. Okay. So now we check. Okay, now it's working. After clicking, there something happen. Okay, so there is a we select index on this side. Now we run the code. After clicking, like there is a show image. So we do the restyling. After first we can create the left or right button also. So like there is button for left, there is button for right shift to change the images. So we right. Okay. Now there is a span for cross also to cross the. Okay. So like there first we can do the styling. So we do use the inline styling in this, like display now flex. No check. Okay. Now if now fade only the direction of the align item center. Okay. Okay. Now the right and left function are not working. So we also write this also. So in this we use the on click function. We write on click and fade select index after select index plus -1 because we doing left side plus index no images dot length modulo image dot length. Okay. So we hide the left button. We check it working or not. So the left is working. Now same for the right side. So after the button, we can right side. But okay, we create one more button, but we remove them. We can write the function on click. Wait, select index null. Okay. Okay. Now the right is also working. So now our code working properly. Either the rotated left, the image shift right also. Or after clicking, they can close also. So this is our image gallery viewer. The problem statement if you are required to build a pagination table
component that display a list of items such as products, users in a tabular format with a pagination support. For like the requirement, display a table data, you can use a mock data like array of object, show a specific number of row as per page, default 10, and provide pagination control, previous, next button, page number for direct navigation. Okay, so now we create this machine learning interview question. For like the input there mock data and output we can show the data, and we can give all the functionality also. So first we go to the VS code, and now first we create a React project using the npm command like npm create vite @latest, then under this pagination table folder. Okay, now our select our framework is React and variant is JavaScript. Okay, now we install all the dependencies that require for them. Now we done on the localhost npm run dev. Okay, now we remove the unnecessary code that are given. Okay, we remove the styling also, unnecessary styling. Now what we do, we can create a component. Okay, like component name pagination table. Okay, like you can also you give any name. So I give like pagination dot jfx. Okay, rfce. Now what we do, we write the heading. The heading is pagination table. Nation table. Okay, now we import the pagination component on this also. So we import. Now we create a data like mock viewer data. So we have to do, we can create a data file, and we create data.jf file. Or we give the data like I already write the mock data code. For this code they can generate the 100 user mock data. Okay, so we now import in the app.jf, import mock data from data.jf. Okay, now what we do, we pass this mock data in pagination. Okay, mock data, we give the name of data. So we can pass using prop. Now in pagination we can spread this. Okay, now what we do, we first create table. Okay, so we create table, we create table heading, we directly create the table row, and table row there is a id, name, email, and age also. Okay, but if you now table row is created. Now first fetch from state for the pagination data. Okay, so we fetch a state const current state, current index
set current index useState 1. Okay, the initially the current index is 1. Now const the page per user. Page per user. Okay, so is equal to 10 const total page is equal to data dot length divided by page per user. Okay, const start index is equal to current index minus 1 multiply page per user. Okay, now we can fly the data. The const paginated data is equal to data dot flies start index plus page per user. Okay, so we now show the page data. So what we do, we create t body. Okay, now first we check paginated data not equal to, if paginate data not equal to 0, then we show two things. First, we show no data available. No data available. Then in this we check the condition paginated data dot map data paginated data so I can think about this. So we write tr, we give the key data dot id and td data dot id of data dot name td data dot h. There is one also data dot email. Okay, so we check our data is showing or not.
So our data is not showing, but we can follow them after. First we can write a give for their like fit their button, this button for left, then there is a span current index, the total page. Okay, so they show or not? Okay, they show. Now what we do, there is a button for right also. Like first we done the format, then we can solve the problems. Okay, so we check what are the problem. Okay, in paginated data we check their length. If the length is not equal to, then we show the data. Or in this we have to. Okay, now we check. So you see our data is showing, but the left right buttons are not working. Okay, so we follow this also. So on the left button we can apply the on click events. Like apply on click events, set current index, we have value p plus 1 plus 1 full out p minus 1 and initially 1 set current index. Okay, and same for right. Okay, in this we have plus 1 or finally total pages. Okay, check it working or not. Okay, so the directly shift to the last. Okay, we do some mistake, like we first let max function on this and we apply min function on this, so it don't directly go to the. So now we shift the shift. Now we also apply one condition also, like disabled condition, like disabled if current index is equal to 1. Okay, or same for this also, disabled equal to current index is equal to total page. Okay, so now you see on the output, like in the first they don't want to go to left, and right in the last they don't go to the more right. Okay, so this is your paginator table. Follow a machine coding question named Accordion components. Build a React Accordion component that display a list of question and answer. Only one section can be expanded at a time. Clicking on expanded section should collapse. For like the requirement, render a list of FAQ question and answer. Each FAQ is collapsible, expandable. Only one FAQ item can be open at a time. Clicking on already open item should close it. Okay, so we use the data and the correct, we use the useState hook in this. For now we first go to VS Code. So we first create our React project using the command npm create read
latest and under this accordion folder. Okay, so we select our framework is React using type JavaScript language. We install all the packages that required. We run our project if working or not. Okay, for our project is properly working. So now we first clear the code because we write from scratch. We create a components using RFC command. We remove styling also. Now we create a components, give our name accordion dot jfx. We create the function. Okay, now first we import in this. First we get h1 accordion. Now we import the accordion in this. Now accordion is import. So first we can paste our data like the fake data that we used, and we create a state name open id set open id use state null. Okay, now this is our div. First map the data freq data dot map item div up. Now create a button, give them item dot question. Okay, now we can create the toggle open id is equal to item dot answer. Okay, and then div item dot unfill item dot unfill. So like after clicking this button on click where is working of toggle go dim item dot id. Okay, so const toggle accordion id set open id previous will save equal to id show null the id.
Okay, we check any error or not in our code. Okay, if we can check using item.id, recipe.map. Okay, the mapping. Oh, okay. For now, check. For now, our website is working. The components are expanding. So we also like give the styling also, but the styling is not the important part. The main is the logical part. So this is our accordion. So after clicking, they can expand. Okay. Follow a React machine coding interview question named dynamic theme feature. So the problem statement is create a simple React application that allows the user to toggle between light mode and dark mode using a button. The theme should dynamically update the background and text colors of the entire screen using inline styles only. Okay. The requirement is toggle button. A button labeled toggle theme should fit between light and dark mode. The theme text display the current theme, either light mode or dark mode. Okay. So we use state management, use state hook in this problem. For now, first we go to VS Code, create a React project. So we create using Vite. So we give the npm command for the Vite. Npm create Vite at the rate latest under the theme feature folder. Okay. Now I select the framework. The language is JavaScript. Now the setup is install the packages that required for this package.json file for React setup. Now run this npm run dev. Okay, now our project is properly working. The setup is done completely. Now we remove the unnecessary code that are given. Remove the unnecessary styling also. So then we create a simple function name using RFC. Okay, so now check the code is okay. Now code is moving. Now we create a component. Okay, components and give this name theme feature .jfx. Okay, now RFC the folder is created. Then import in this main file app.jfx. First write the figure theme feature. Okay, now what we do, we import the theme feature component in this. Okay, now we check. Okay, now it is important completely. We remove the unnecessary code. Now first we create a state where we store the mode. So if store if to store the states, okay, of dark mode and light mode. So first we can create this under this our theme feature function const if dark mode, then set if dark mode. So initially
it is false. Okay, now we create the styling for the particular dark mode and light mode. So first we can create for light theme. Okay, for the background color, back. Okay, background color is FF FF 6 times. Okay, then color. Okay, now give them some padding. This is not required, but before particular styling with them, give them, and text alignment, center. Okay, now give him a height 100 VH. No, okay. Now this is for light theme. Now for dark theme, we copy because some things are same. Now this is a dark theme. Dark theme. So we only change the background color and the color. So we give background color 1A, 1A, 1A. Okay. Okay. Now our theme feature box. We create a H1 in which there is a button of dark mode and light mode. For we create different dynamic button. Okay. So first we give the styling to our div. If dark mode, then the theme is dark theme and not the theme is light theme. So we give to the our div. Now we use a dynamic button in H1. So we use if dark mode, then the button is set to be dark mode. Dark mode, and then light mode. Okay. So this is our button fit. Now create a button. This is like when the change, they automatically shift. Now this is our button. So this button is toggle theme. Okay, we apply on click event on this button also. Um, create a function on unkit. Set if dark mode to not if dark mode. Okay. Now we do some styling in our toggle button. Okay, we don't close the function for wet.
Now do the styling in there. Now give them a padding 10 pixel. Like for the button we use cursor pointer is equal to cursor is equal to pointer. Okay. And now set their background color. Background color is equal to is dark mode. Is dark mode. The color is not. The color is okay. Dark mode. Where our color is set. Now we set our color. No, there is some error. This is error. Now set color. The color is also condition based. Is dark mode. Remove them. 1 2 3 0 and then SSS. Now what is problem? The color is set. Okay. There is 2 dots. Okay, now give them border. None. Leave a div come. The is small. Okay. So we give them. Now check our code is working or not. So there is button. The color is changing. Okay. Okay, now the feature of our theme feature is working correctly. They change the dark mode, light mode, but there is problem in changing in color. They have not changed the color. We check what is okay. Some places we don't use the hashtag in color codes, so this is very important. That's why our background color don't change. Okay, now we use correctly. Texture and center. Okay. Okay, now we check. Okay, now theme feature working correctly. We change the theme. So there is the component under the Accordion. That's why the full screen not covered. This is for only for the components. Okay, we also do there using the passing the prop, but for your machine learning this is enough. You can submit this also. We follow a machine coding interview question named simple code generator. So the problem statement is to build a React app that display a random code
from a fixed list each time a button is clicked. So the requirement is 5 codes for the text and the author name are display one code and its author initially. Okay, where the button is clicked, the different code and from the array are generated using useState, and we use inline CSS in this. And the concept we used in state management is useState, event handling, and rendering dynamic data for random selection from an array. So first let's go to the VS Code. So first we can create a React project using npm command, npm create @latest. Okay, under this code generator folder, we select the framework of React, the language of JavaScript. Now we install all the packages required to run the React. Now start our server, npm run dev. Now our setup is completely done. Let's remove the unnecessary code, unnecessary styling. Let's remove this. Use RFC function. Okay. Now we create components and give their name, code generator.jsx, use RFC. Okay. Now we first create a list of codes that I already saved. Okay. Now we create a state to feed the text. So const current code equal to set code current code useState initially code 0. Okay. Now we write a function. First h2, it's dynamic. In this we show the current code dot text. Then there is a paragraph in which we show dot author. Okay, there is a button get random code. Okay, there is a on click function get random code. Okay, now we create the function const get random code. Okay, now we create const random index is equal to math dot floor math dot random function.
into quotes dot length. Okay, now set current quote is equal to quotes dot random index. Okay, now we import the function on our app.jfx. It quote generator writer import the quote generator. Okay, now let's check. Okay, now the initially there is a code be yourself, every else is already taken and the author name. When you click the code and the author name is changed. Okay, so we can like do also styling also, but the styling is not important. So this is the machine coding interview. So can ask like given an array, you can show the data on click events, or also you can also fetch the data using API. So you can fetch the data and store in a variable and also show on the screen. So if you have any doubt, you can comment it. Follow a React machine coding interview question. Name star rating component. Okay. So in this question, we build a simple star rating component using React. The requirement is to display 5 stars. When the user hover over a star, highlight all the stars up to that star. When the user clicks a star and save the rating, display the selected rating number next to the stars. Okay. After clicking, the user should still be able to change the rating by clicking a different star. Note you can use simple emoji or icons from also you using React icons and keep the UI simple. Use useState for managing ratings and hover states. Okay, so let's go to VS Code. Now first we set up our React project using npm create create wheat address latest under this star rating folder. Okay, now our framework is React and our language is JavaScript. Now we store all the packages that required. Use npm install. Now all the packages are installing that are used in to build and set up React. Like there is two main dependencies. First is React and React DOM. Okay, now they are installing. Okay, our packages are installed. Now we run our project. Key setup completely done or not. Okay, our website setup is completely done. Now we remove the unnecessary code because we create from scratch. So remove the styling also. Okay, now we create a components. Components, and the name of the component is star rating .jsx. Okay, now write the function. Now import this on app.jsx. First we give name star rating and import star rating on the folder. Okay, now we first fed the state that are required. So we fed the states. First is we fed to first is rating. So we fed using fed rating useState. Initially
empty, and const we state the hover value also, set hover use state, and initially we set false, I think. We set null, and in the initially we set 0. Okay, now we required a icon. So first we install a library. Let's stop the server. npm I create icons. Okay, for this if library, where we can import the star icon. Okay, now rerun the server. Okay, our server is run. So we import the icon, import fa star. Okay, we import the fa star. Now we map this, like we have 5 star, so by 1 2 3 4 5 dot map with index. Okay, first const is active, hours hours index less than or equal to hours index less than or equal to string. Okay, less than or equal to rating. On click we set handle click index. Okay, on mouse, like this is the on click event. On mouse over set on mouse hover. Mouse enter, enter, set hover equal to index on mouse leave set hover equal to null. Okay, so this is also function. Okay, they equal to find. Like why is happening? Okay, now this is our key. Now we create a div span rating for showing rating. Okay, the handle click function const
under click index set rating is equal to index. Okay. Okay, we do one mistake. Like after this, we don't return the IFA star is under the diff return function. Okay. Now there is a auto error mistake also. Like on mouse over, on mouse leaves, mouse click. So there is now let's see on VS Code. When we hover and click, the ratings change. Okay. So our interview question, we start rating that we can follow. You can also enhance the client, do their styling also, but the logical answer and solution is this. Follow React machine coding interview question. Name file upload with preview. Like the problem statement is create a simple React component that allow the user to upload an image file from the device when selected, and the image should be displayed as a preview before any actual upload take place. So the requirement, like provide an input type file to select an image. When a valid image file is selected, read the file using the file reader, then display a preview of the selected image. And if the file is not on an image, ignore it or clear the preview. Okay. So we use the functional components in React hook, useState, and with no external library for the preview logic. Styling is optional, but focus on functionality. Okay. So this is our question. So let's solve this. First we go to VS Code and first we complete our React setup. So first is to create with the test under the folder. First we select the framework, then we select the language, then we install all the packages that are required to run the React on our browser. So they install the packages. Now run this using npm run dev command. Now they are shown on localhost 5173. So the project setup is completely done. Now remove the unnecessary code. Okay, now remove this code and a simple RxC function. Remove the unnecessary styling also because we made some scratch. Okay. Now create a component on this folder. In the folder there is a file name image upload.jsx. Okay. Now use RF3 for they create the function. Now let's check it working or not. So okay, they're showing. Now import this on app.jsx also. Now we import. Okay. Now we import the image upload on the folder and give our name image upload. Okay. Now I see on the screen. Okay.
Now go to image upload folder. Now create a input file. So we first create a run to show where you upload the image. Define fade except only image. Okay. Then we on change with function handle upload. Okay. We create the function also. Now we create the function const handle upload. Okay. Okay. Now we create this function under this image upload folder. Okay. So create it. Now what we do? We set a state of image, set image, and use the useState property. Okay. Done. Now there is a image preview option. So if image and then if the image is in the input, so we show a div on this image. So we show a div in this div. There is a h1 h image review, and there is a image also. Huh? Image also. भाई क्या पड़ा यार. There is a image and there is a image. We the path the image on this image. Okay. And for the alternate text we write preview image. We fade their width 300. Okay. Fade the width 300. Okay. Now we write their function. We create a const file. A dot target dot files 0. Okay. Files. Okay. Now what we do? We apply a condition if file and then file dot type dot starts with image. If the file type starts under the column image, so we do some operations. We set a reader const reader is equal to new side reader. Okay. Reader dot on node they call a function and set the image of reader dot result reader dot result. Okay. So reader dot read data URL file. Okay. Now we say and so
else pet image equal to null. Okay, and the image there is a asterisk marks also, for they only take the images. Now let's check on this. So they take the images and they show it on a preview screen also. Okay, so when I choose another image, so they change also. So this is our direct machine coding interview for upload images. Okay, so this is the code that you access from the GitHub. So if you have any doubt, you can comment it and subscribe Coding for Dev for more videos. Thank you for watching.